हेलो एवरीवन वेलकम टू OPSC वाला आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर हमें डिस्कशन करबा विथ रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्लानिंग इन इंडिया 12टा प्लान 12th 5 ईयर प्लान फास्ट आरंभ करके 12th ऊपर हमें पूरा डिस्कशन करबा डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन एथरे प्रीलिम्स रु आपनकर आसी थाए प्लस मेंस रे भी या ऊपर क्वेश्चन आसी थाए सो ये टॉपिक एथि हम पे बहुत इंपोर्टेंट सो फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 ईयर प्लान एमनकर ऑब्जेक्टिव कोन था या पर डिस्कशन तो डेफिनेटली करबा ता पूर्व जस्ट लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया फर्स्ट टाइम पे 1934 रे असला एम विश्वेश्वरराय प्लान एम विश्वेश्वरराय प्लान फोकस कला एग्रीकल्चर रु इंडस्ट्री को शिफ्ट ऊपर कोडी कहली एग्रीकल्चर रु इंडस्ट्री को शिफ्ट ऊपर 1934 रे असला FICCI प्लान ये कहला लासेस फेयर को एंड करिया पई इट मींस नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट को एंड करिया पई इट प्रपोज्ड फॉर इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट सो कैपिटलिस्ट मानक हाथ में कंप्लीटली वी कैन नॉट लीव द इकोनॉमी अप टू द मर्सी ऑफ द कैपिटलिस्ट 1938 रे असला कांग्रेस प्लान इट वाज इनिशिएटिव ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू was the chairperson 1944 रे असला बॉम्बे प्लान इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट यार ऑब्जेक्टिव थिला इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस एग्रीकल्चरल रिस्ट्रक्चरिंग इंपोर्टेंट पॉइंट बॉम्बे प्लान ने जेहेतु एटा इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करथिला एंड इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट तो गोटे पॉइंट से लिखि रे कि एग्रीकल्चरल रिस्ट्रक्चरिंग मैक्सिमम स्टूडेंट आपको लिखंती कि इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉम्बे प्लान 1944 रे असला गांधीयन प्लान इट वाज ड्राफ्टेड बाय आचार्य SN अग्रवाल एम्फासाइज दिया गला कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एवं डिसेंट्रलाइजेशन ऊपर 1945 रे असला पीपल्स प्लान इट वाज ड्राफ्टेड बाय MN रॉय ये फोकस कला एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन दीटा जाक बैलेंस करके हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को एंश्योर करि परिबा 1946 रे असला प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड यार ऑब्जेक्टिव थिला टू रिव्यू द प्लान्स एज वेल एज टू रिव्यू द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स 1947 रे असला इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी इट वाज फाउंड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी एंड रिकमेंडेड फॉर formation of a planning commission so 1950 रे असला सर्वोदय प्लान इट वाज ड्राफ्टेड बाय जयप्रकाश नारायण ये एम्फासिस देला एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऊपर फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन टेक्नोलॉजी ऊपर लैंड रिफॉर्म ऊपर 1950 रे असला हम पकरे प्लानिंग कमिशन सो 1950 रे प्लानिंग कमिशन पर 1952 रे असला नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये गोटे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बा एनडीसी को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोली मध्ये कहा जाय देन असला 2015 रे जो प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस कले किए ना नीति आयोग 2015 ने आसले हम पाखु नीति आयोग तो एमती किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि मासी भी ये क्वेश्चन मानक पाखु लास्ट एट द एंड नाउ लेट्स टॉक व्हाट इज प्लानिंग कहले हम कोन बुझे प्लानिंग बुझिया पई हेले दीटा छोटो कांसेप्ट बुझिया दरकार आ किछि दरकार नै कोन कहले गोटे होछि रिसोर्स आ गोटे होछि ह्यूमन नीड बा ह्यूमन वांट इज अनलिमिटेड हमें ऑलरेडी डिस्कस करि सारिछे नाउ रिसोर्स कोन व्हिच कैन सैटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड एज अ रिसोर्स एग्जांपल ह्यूमन वांट आदि इच्छा थिला बाइसाइकल चलया पई काली की स्कूटर रु कार रु लग्जरियस कार नाउ द ह्यूमन वांट इज इंक्रीजिंग वांट को जे सैटिस्फाई करे मु कहले रिसोर्स सो रिसोर्स जदि हम देखिया वी हैव लिमिटेड रिसोर्स सो बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स वी हैव टू सैटिस्फाई दिस अनलिमिटेड वांट कोन कहले बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स वी हैव टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट तले एटा केमति करा जाय परिबो ना by optimum utilization of the available resource हम पाखे जति रिसोर्स अछि तार ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिया पड़ियो सो प्लानिंग इज अ प्रोसेस थ्रू प्रोसेस वी हैव टू अचीव प्लानिंग तो प्लानिंग दरकार कोन पई देयर इज लिमिटेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म मींस वी कैन नॉट लीव एवरीथिंग अप टू द मर्सी ऑफ द मार्केट पई हम सब छाड़ी परिबन बिकॉज़ मार्केट र बेसिक ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नाउ इट विल नेवर थिंक अबाउट सोशलिज्म ये सोशल डेवलपमेंट ऊपर फोकस करबनी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऊपर फोकस करबनी सोशल लीगल राइट्स को एंश्योर करबनी सो देयर इज अ नीड फॉर सोशल जस्टिस मींस दीज आर द सिटीजन्स दे आर द पोर पीपल फॉर द पोर प्राइवेट सेक्टर विल नेवर स्टैंड माने कर हेल्थ सेक्टर देखो तो हेल्थ सेक्टर रे प्राइवेट हॉस्पिटल जो माने अछंती ए माने केबे भी दे विल नॉट वर्क फॉर द पोर दे विल नॉट वर्क फॉर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो सोशल जस्टिस पे हमको प्लानिंग रा आवश्यकता अछि then resource mobilization for development now whatever the resource we have to allocate those resource or redistribute those resource as well as how kon kariya padibo हमको we have to mobilize those resource so resource mobilization पई हमको planning रा आवश्यकता अछि तले इंडियन प्लानिंग रा फीचर्स कोन जदि हम देखिबा इट इज इंडिकेटिव टाइप ऑफ प्लानिंग कोन कहली टारगेट्स आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट for the different sectors so in India we have the control of both private sector as well as the public sector so Indian economy ko ame kohti this is a mixed economy on it is a mixed economy so public and private sector both coexist
इंडियन प्लानिंग इज अ सोशल प्लानिंग, ये कंप्लीटली इकोनॉमिक नुहे। अनरिलायबल डाटा हम पाखे प्लानिंग रिलेटेड डाटा जहाँ भी अच्छी ये अनरिलायबल हो जाए हम बिकज कहीं हम पाखे से स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ डाटा ना ताली प्लानिंग ऑब्जेक्टिव कौन प्लानिंग बेसिक ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ग्रोथ सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरशीलता जहाँ द्वारा को आम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर डोंट नीड टू इम्पोर्ट बिकॉज वी हैव आवर ओन प्रोडक्ट देन रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी रिडक्शन इनइक्वालिटी इनकम इनइक्वालिटी रिडक्शन दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। नाउ ये गला प्लानिंग कौन आम देखिले एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द और हाउ दिस कांसेप्ट ऑफ प्लानिंग ओरिजिनेटेड बाय यार एक्सपेंशन केमिति हिच। सो प्रथमे यूएस रे 1916 ने गोटे कांसेप्ट आसला जको जे रीजनल प्लानिंग कोडो ना थ्रू टेनिस वैली प्रोजेक्ट। नाउ टेनिस वैली प्रोजेक्ट इट वाज अ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट रो डिफरेंट एस्पेक्ट है जेमते कि एग्रीकल्चर पई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टूरिज्म फिशिंग तो डिफरेंट अप्रोच था यहाँ तो आसला प्रथम टीवीपी बा टेनिस वैली प्रोजेक्ट। टेनिस वैली प्रोजेक्ट टाइप रो इंडिया रे 1948 रे आसला डीवीसी बा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। 1966 रे घाना रे आसला वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट। नाउ दीज आर द टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग। आउ ये जतले फर्स्ट टाइम तो यूएसए रे जो प्रथम थर पर आसला रीजनल प्लानिंग थ्रू टेनिस वैली कॉर्पोरेशन इट वाज अ सक्सेसफुल प्लान। जेहेतु ये प्लान सक्सेसफुल होगला ऑटोमेटिकली आपको देखि अदर कंट्री माने ए प्लान को बा ए अप्रोच को अडॉप्ट करबा स्टार्ट कर देले। सो नेशनल प्लानिंग रो कांसेप्ट 1917 रे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आसला। ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ने 1917 रे यार ओरिजिन हला। 1928 रे फर्स्ट टाइम पे स्टालिन अनाउंस कले इकोनॉमिक प्लानिंग। सो यूएसएसआर रो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आसला 1928 रु 33 पर्यंत। ये प्लान को गॉस प्लान बोली मते कुआ जाता है। सो गॉस प्लान इज द फर्स्ट सोवियत प्लान। ये इंपोर्टेंस देला कहा को ना ये इंपोर्टेंस देला हेवी इंडस्ट्री को ओवर लाइट इंडस्ट्री। सो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री दे आर गिवन लेस इंपोर्टेंस। इंडिया ए टाइप ऑफ प्रोसेस को बा गॉस प्लान टाइप ऑफ रिस्पांसिबिलिटी को अडॉप्ट करथिला इन इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान। नाउ कम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम। प्लानिंग को दुई भाग रे डिवाइड करता है गोटला इंडिकेटिव प्लानिंग एज वेल एज इंपरेटिव प्लानिंग। इंपरेटिव प्लानिंग कोन ना जोड़ा का स्टेट रन इकोनॉमी अर्थात सोशलिस्ट इकोनॉमी बा कम्युनिस्ट इकोनॉमी जेंते हम देखले चाइनीज इकोनॉमी बा पूर्वर यूएसएसआर जोड़ा थला सोवियत यूनियन तार इकोनॉमी हला ता आको हम कहउचे इट इज इंपरेटिव इकोनॉमी। सो imperative planning रे it is faced by the it is adopted by the command economies state run economies like USSR China Poland Hungary Austria Romania ए टाइप ऑफ कंट्री। सो जते बळे एही ब्लॉक रु इकोनॉमिस्ट माने ईस्ट ब्लॉक रु जते हम वर्ल्ड को टोटल देखिबा एमती ईस्टर्न साइड रे एटी सोशलिज्म प्रैक्टिस करा जाय वेस्टर्न साइड रे कैपिटलिज्म प्रैक्टिस करा जाय। सो वर्ल्ड वार टाइम पीरियड रे सोशलिस्टिक बा ईस्ट साइड रु इकोनॉमिस्ट माने मूव कले कोठी की दे माइग्रेटेड टू द वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्री को जिबा परे दे लर्नड अबाउट द कैपिटलिज्म एवं से निज कंट्री कैपिटलिज्म को इंप्लीमेंट करिया पई चाहिए बट इन देयर ओन कंट्री देयर आइडिया वाज रिजेक्टेड। फॉर एग्जांपल जने पोलैंड रे जने इकोनॉमिस्ट थे ओस्कार लेंज ये रीजन को जिबा परे वेस्टर्न कंट्री को जिबा परे कैपिटलिज्म सिखिले एवं कैपिटलिज्म को तांका कंट्री इंप्लीमेंट करिया को लागले बट इन हिज ओन कंट्री हिज आइडिया वाज आउटलेटली रिजेक्टेड। सो इंपरेटिव प्लानिंग रो पिक जदि हम देखिबा चाइना रे मिलथिला हमको अप टू 1966 बट जेतोळे इकोनॉमिक स्लो डाउन देखा गला चाइना रे मध्य चाइनीज इकोनॉमी को हमें सेव करि पारले चाइनीज इकोनॉमी को हमें प्रोटेक्ट करि पारले नाही। सो 1985 रे देंग जियाओपिंग चाइना रे ओपन मार्केट मॉडल नै आसले व्हिच इज मोर और लेस सिमिलर टू योर कैपिटलिस्टिक मॉडल। देन आसला इंडिकेटिव प्लानिंग। डेमोक्रेटिक कंट्रीज बेसिकली एमाने ही इंडिकेटिव प्लानिंग को अडॉप्ट करथांती एंड इंडिकेटिव प्लानिंग रे मिक्स्ड इकोनॉमी था इंपोर्टेंस इज गिवन बोथ द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर। तामाने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दीटा को आखे अगर रखियो हमें कहबा कि ओनली सोशलिज्म नो ओनली सोशलिज्म हैज आल्सो डिमेरिट्स लाइक government is already overburdened with so many things like internal security, external security, legislature, executive, judiciary. You cannot overburden the government with more production. So that's why for production of private goods private sector is required. हमें प्राइवेट सेक्टर को ठीक काम लगे परियो प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट कले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हबो प्लस डिमांड अनुसार सप्लाई हे परियो काहे कि ना प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर में ही हेता है ना गवर्नमेंट सब सेक्टर इंटरफेयर करि परियोनी। फॉर एग्जांपल टीवी फ्रिज एसी वाशिंग मशीन ये सब प्रोडक्शन गवर्नमेंट करि परियोनी ये प्रोडक्शन किए करि परियो केवल प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन कले हमको बेनिफिट फर्स्ट बेनिफिट डिमांड अनुसार सप्लाई मिलिबो सेकंड बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हबो बरम या सहित गवर्नमेंट को टैक्स मध्य मिलिबो। So that is why private sector is also important for us. So
आमको देखिए मिला मिक्स्ड इकोनॉमी बा इंडिकेटिव टाइप ऑफ प्लानिंग सो फ्रांस रे जापान रे ए बलिया मेथड को कुछ दिन पर्यंत प्लानिंग को यूज करा गला सो इंडियन प्लानिंग कथा कहली केतरा क्वेश्चन नीचे करियो समस्त मत आंसर तबे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज स्टिल अ कमांड इकोनॉमी ऑप्शन ए यूएसए बी चाइना सी क्यूबा डी जापान next who wrote the book titled planned economy of india a mn roy b dr manmohan singh c m visweswar rai d sir purushottam das thakur das now come to 5 year plans one by one I will discuss 12 5 year plans the first 5 year plan it was from 1951 to 56 just after independence of india what is the objective and it was based on harudamar model now the objective was rapid agricultural development because just after independence से समय हम पाखे कौन से प्रकार साइंटिफिक टेक्नोलॉजी अवेलेबल नथिला सो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन ऊपर कंप्लीटली रिलाय करि परिबनी दैट्स व्हाई वी फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर हला तो इट रैपिड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट दिस वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन पाई ना फूड सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करिवार थिला फूड सिक्योरिटी नथिला से समय हम पाखे फूड अवेलेबिलिटी नथिला इंडिया को मोस्टली डिपेंड करिया को पड़थला कहा पर ना इंडिया को मोस्टली डिपेंड करिया को पड़थला on other countries foreign country मानक ऊपर इंडिया डिपेंड करथिला फूड इंपोर्ट करिया पय सो ए समय जदि हम देखिबा देयर इज एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमिक सेक्टर स्टेट एटी फुल्ली पार्टिसिपेट करथिला ए समय 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटीज एमानकर इंस्टीट्यूशन एमाने एस्टैब्लिश हेतिले ऑब्जेक्टिव कोन थिला एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पावर सप्लाई प्राइस स्टेबिलिटी बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत अधिक होतला इन्फ्लेशन को कंट्रोल करबा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को डेवलप करबा प्लस रेफ्यूजी मानन को थैथान करबा बा रिहैबिलिटेशन ऑफ द रेफ्यूजीज यदि फर्स्ट 5 ईयर प्लान अप्राइजल हमें देखिबा कि लास्ट 3 वर्ष रे 1955 56 ई समय 54 55 56 ई समय जदि हम देखिबा देयर वाज गुड हार्वेस्ट सो हार्वेस्ट पार्ट रे एग्रीकल्चरल पार्ट रे इट वाज अ सक्सेसफुल मॉडल बट जब हम देखिए रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजी प्राइस कंट्रोल फूड सेल्फ सफिशिएंसी ये सब हमें अचीव करि पारि नथिले सो दे वर लेस अचीव तापर असला 1956 टू 61 पर्यंत सेकंड 5 ईयर प्लान नाउ सेकंड 5 ईयर प्लान इट वाज नॉट इंप्लीमेंटेड फुली ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हम पकरे फॉरेन एक्सचेंज रा अवेलेबिलिटी नथिला बट सेकंड प्लान में सब बेले गोटे क्वेश्चन आसे सेकंड 5 ईयर प्लान ने 5 स्टील मिल्स एस्टैब्लिश्ड एट विलाई राउरकेला एंड दुर्गापुर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको मन रखिए and it was based on Nehru Malnovis model यार ऑब्जेक्टिव कौन थिला रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ एम्फासिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री सो इस समय इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 भी आसी अब ये इंपोर्टेंस का गला बेसिक इंडस्ट्री एज वेल एज हेवी इंडस्ट्री दीटा तक इंडस्ट्री को इंपोर्टेंस दिया गला नो दिस प्लान फोकस्ड ऑन रैपिड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट ह्यूज इंपोर्ट थ्रू फॉरेन लोन करके कहला कि वी कैन गो फॉर ह्यूज इंपोर्ट acute shortage of forex so foreign exchange reserve हम पाखरे कम थिबा कारण डेवलपमेंटल टारगेट्स को मध्य पूरा करा जाय परला नाही सो ई समय जदि हम देखिबा प्राइस राइज वा इन्फ्लेशन वाज एट द टॉप नोच पाखा पाखि 30% रु अधिक इन्फ्लेशन ई समय देखिबा मिलला सो 1961 टू 66 तापर आसला हम पाखो थर्ड 5 ईयर प्लान इट वाज मोस्टली इट वाज अ फेल्योर बिकॉज़ ए टाइम पीरियड रे जदि हम देखा 1962 वार 1965 वार सो वार प्लस ड्रॉट फैमाइन ई कारण मानक पई इट वाज अ फेल्योर सो ए समय स्टार्ट थिला पंचायत इलेक्शन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड फॉर्मेशन हेतला ये समय ऑब्जेक्टिव थिला सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरशीलता भारत भीतर ही प्रोडक्शन हो सो दैट विल नॉट डिपेंड ऑन इंपोर्ट एटी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बा इंपोर्ट न करिया पई डिफरेंट मेथोडोलॉजी को गवर्नमेंट अडॉप्ट करितला जाको सेल्फ रिलायंट को जाय बा आत्मनिर्भरशीलता को जाय प्लस नेशनल इनकम को 5% इंक्रीज करथिला आर बेसिक ऑब्जेक्टिव या सहित सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बेसिक इंडस्ट्री एवं डिस्पैरिटी रिडक्शन बा इनइक्वालिटी रिडक्शन थिला अनदर ऑब्जेक्टिव तो ये थिला थर्ड 5 ईयर प्लान न कथा मु ऑलरेडी कहली कि इंडो चाइना वार हला 1962 रे इंडो पाकिस्तान वार हला 1965 रे आ ये समय हमको फैमाइन ड्रॉट देखिबा को मिलिला सो 1960s यदि हम देखिए इट वाज अ वेरी ट्रबलसम डिकेड फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सो ए कारण पई हमें नेक्स्ट 5 ईयर प्लान न आनिकी आनिले एनुअल प्लान गोटे फाइनेंशियल ईयर पई आस्ता है 1966 टू 67 67 टू 68 68 टू 69 so 3 annual plans adopted ये टाइम पीरियड को प्लान हॉलिडे बोली कहा जाए ये सब क्वेश्चन आसे मन रखिबे प्लान हॉलिडे केबे रु केबे 1966 रु 69 पर्यंत आस्ता है सो ये टाइम पीरियड रे जदि हम देखा देयर इज क्राइसिस इन एग्रीकल्चर देयर इज सीरियस फूड शॉर्टेज हैला
सो तापर आसला फोर्थ प्लान तापर कोन कहली ये समय आसला फोर्थ प्लान हाँ थर्ड प्लान एनुअल प्लान में न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करा जायतिला हाई यील्ड वैरायटी सीड जोटा हमें फूड सिक्योरिटी कहूचे हाई यील्ड वैरायटी सीड को यूज करा गला देयर वाज एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कोन पई एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर ईच एंड एवरीवन. Okay, fourth plan was very ambitious because third plan was a failure. As of now or 1969, the Indian economy was not developed to that extent. That's why it was quite ambitious plan. But though it was ambitious, it was a big failure for the government of India. Growth rate was only 3.5%. Inflation rate was very high. Indira Gandhi government at this point of time in 1969, it nationalized 14 major Indian banks. है ना? कौन पाई 14 मेजर इंडियन बैंक्स रो नेशनलाइजेशन थला 1969 ने बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. ऑब्जेक्टिव कोन थिला टू रिसोर्स मोबिलाइजेशन बैंक पाकर थिबा मनी को हमें यूज करि परिया फॉर डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. प्लस ये समय जदि हमें देखिबा इंडियन एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाइथिला. ऑब्जेक्टिव थिला ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस गरीबी हटाओ टारगेट थिला. ऑब्जेक्टिव कोन गरीबी हटाओ. ओके तापर असला फिफ्थ प्लान थिला 1974 रु 79 पर्यंत इन्फ्लेशन रेट थिला हाई. ये समय नेशनल हाईवे सिस्टम आरंभ हो गला फर्स्ट टाइम पई. ऑब्जेक्टिव थिला रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस. कोन को रिमूवल ऑफ पॉवर्टी बाय द एंड ऑफ 1974 देखंतु भारत स्वाधीन होबार पाखा पाखी 27 वर्ष हो गलानी. ये समय सुधा स्टिल पॉवर्टी एक्जिस्टेड. नाउ एबे भी पॉवर्टी एक्जिस्ट कोची इन डिफरेंट फॉर्म्स. सोशल पॉवर्टी इकोनॉमिक पॉवर्टी विल डिस्कस in some separate session. So एठी कोन देखला में ना देयर इज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता ए पर्यंत हम पाखरे मिल पार नथला. 1980 रु 85 आसला सिक्स्थ 5 ईयर प्लान. एठी पॉवर्टी ऊपर अटैक करा गला डायरेक्टली एवं ऑब्जेक्टिव वाज एक्सपैंडिंग इकोनॉमी. एक्सपैंडिंग इकोनॉमी मींस ग्रोथ को स्टिमुलेट करिवार कथा कहआ जाउची. ग्रोथ जनरेट हबो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हबो प्रोडक्शन बढ़िलो ऑटोमेटिकली ग्रोथ इंक्रीज होता है. So most of the targets here achieved. Growth rate was 5.5%. Yes, my family planning model was adopted. Then seventh 5-year plan asla 1985 ru 1990 पर्यंत. एटी most of the targets achieved. Growth rate was 6%. Objective कौन थिला to accelerate the growth in the food grain production. Food grain production को increase करवा थिला basic objective. Employment opportunities बढ़ेवा, productivity बढ़ेवा, agricultural productivity बढ़ेवा. पुणी एही समय रे now it is again a transition time period. That's why 1989 to 91 there was annual plans because it was the time period for starting of your LPG model, liberalization, privatization and globalization model. Now LPG model को राव सिंह मॉडल बोली मध्य कहा जाय थाए. काहे कि ना ये समय रे केबे आसिला 1991 LPG मॉडल. से समय प्राइम मिनिस्टर थिले पीवी नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर थिले डॉक्टर मनमोहन सिंह. राव सिंह मॉडल बोली एलपीजी मॉडल बा ग्लोबलाइजेशन परे आसला. 8th प्लान आसला 1992 टू 97 पर्यंत. ऑब्जेक्टिव रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर. खाली एग्रीकल्चर नुहे ये कहला कि अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रोथ होवा दरकार. अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर किए कहो कमे अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर पूछे कहबी पिगेरीज, गोटेरीज, पोल्ट्री फार्मिंग इसम कमे अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर बोली कहू. सो कहला 8th 5-year plan रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन थिला. And the basic objective was rapid economic growth, high growth of agriculture plus manufacturing sector of growth. कौन ये कहूची for the growth of the manufacturing sector. So growth in export and import plus improvement in trade, current account deficit. The 8th 5-year plan का analysis करवा, it was partly success. So an average annual growth rate it is 6.78%. Target थिला 5.68%. Most important on रखबे target थिला 5.6, growth achieve कल कते 6.78. ताने targeted growth to हमें achievement थिला अधिक. Question आसीबो को 5-year plan ने targeted growth to achievement अधिक थिला. Point number 1. Point number 2, statement based question आसी परिबो कि in all the 5-year plans targeted growth rate was always less than what was achieved. So this statement is absolutely wrong because in 8th 5-year plan we achieved growth rate of 6.78% where the target was only 5.6%. Then 1997 to 2002 9th 5-year plan asila objective thila quality of life को improve करिबा, generation of productive employment, regional balance, self reliance. Now quality of life को ये improve करिया पई कहूची कोन कहली
ये कहूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करियो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करियो जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट ना एठी क्वेश्चन आसी पारे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊपर को हम हठात कहीं आसे कहीं ए पर्यंत 1990 to 95 पर्यंत इवन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी इरेडिकेशन इन ऑलमोस्ट ऑल द 5 year plans गरीबी हटाओ फिफ्थ प्लान में स्लोगन दिया गला बट इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लान्स poverty eradication self reliance it was a part and parcel of every 5 year plan but यही समय जदि हम देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंपोर्टेंस कहीं दिया गला ना ग्रेजुअली वी आर कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी मालन्यूट्रिशन हंगर धीरे धीरे बाहर को आसुतले रीजनल इम्बालांस को रिड्यूस करवा सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा ग्रोथ प्लस सोशल जस्टिस अगेन इंपोर्टेंट सोशल जस्टिस मीन्स राइट्स ऑफ द vulnerables especially the poor people or I can say the SC ST OBC women third gender equality promote करिया पाइए कुछ all are equal in the eyes of law GDP growth rate 5.4% target थिला 6.5% देन असला 10th प्लान 2002 रु 2007 पर्यंत ऑब्जेक्टिव करना 8% जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करवा पॉवर्टी रिडक्शन करवा लिटरेसी रेट को रिड्यूस करवा इट वाज सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी रेशियो बाय 5% increase forest cover to 25% increase literacy rate to 75% economic growth of the country was over 8% now it is almost a good plan 10th 5 year plan then asla 11th 5 year plan 11th plan ର objective to rapid and inclusive growth important point এটা আছে পরীক্ষারে तो यार ऑब्जेक्टिव कौन था रैपिड ग्रोथ बुझी पड़थि बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इट मींस टू इंक्लूड एवरीवन हमको देखिବାକୁ मिलला कि धनी माने अधिक धनी होउछन रिच गेटिंग रिचर पोर गेटिंग पोरर गरीब माने अधिक रो अधिक गरीब हो जाउछ सो इनइक्वालिटी रो कथा एटी पड़छि डिस्पैरिटी रो कथा पड़छि ये कुछ इक्वालिटी इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एवरीवन सो ऑल शुड ग्रो इक्वली तो इंक्लूसिव ग्रोथ कहउछि जो मानकर जो दोज हु आर सोशली एक्सक्लूडेड सोसाइटी सोशली एक्सक्लूडेड सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जोटी सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो मानकर अछि को मानकर अछि सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस मुगे भी कास्ट वाइज एससी एसटी ओबीसी हैला वुमेन थर्ड जेंडर पीडब्ल्यूडी सो ये समस्त को इंक्लूड करिया पई कहउछि inclusive growth to include everyone then empowerment through education and skill development now empowerment kon those who are less empowered those who have less power we have to give them more power that is empowerment now empowerment kemti hi paribo na by virtue of education by virtue of skill development so economic empowerment social empowerment political empowerment kara jai paribo then gender inequality को reduce करवा gender inequality means सेठी कहल ऑलरेडी वुमेन मानक ऊपर से वायलेंस को reduce करिया पई कहूची women upliftment of women article 15 clause 3 of the Indian constitution it also talks about exceptional case on the basis of gender the state can go for positive protection positive discrimination of women then environmental sustainability ये पर्यंत हमें growth ऊपर अधिक फोकस करथिले growth रो अर्थ हम कोन ना सब growth अधिक more the growth more is the production more the production more is the environmental impact ये कुछ सस्टेनेबल ग्रोथ बाय एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आवश्यकता अछि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय 2009 इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ 8% तबर 11th प्लान पर असला लास्ट प्लान 2012 रु 17 12th 5 year प्लान गोटिए पॉइंट कहिबे एटी मन रखिबे 12th प्लान रो बेसिक ऑब्जेक्टिव थिला 11th प्लान जोडू छाडिथिला ये सेउटा आगो पढिबो कोन 11th प्लान जोडू छाडिथिला ये सेउटा आगो पढिबो ताले ये प्लान कोन कहूची ये कुछ रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 8% एग्रीकल्चरल ग्रोथ 5% मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 10% हैला so every state must attain higher growth rate than the rate achieved during 11th plan 11th plan whatever we achieve we have to achieve more in the 12th plan so poverty employment pa ye kon कहला ये कुछ poverty rate to be reduced by 10% than the rate at the end of 11th plan 5 crore new work opportunities skill certification education mean year of schooling to increase to 7 years 20 lakh seats for each age bracket in higher education जेंडर गैप को रिड्यूस करवा सोशल गैप को रिड्यूस करवा स्कूल एनरोलमेंट रे सोशल गैप माने एससी एसटी ओबीसी सब स्टूडेंट पढी जेंडर गैप माने वुमेन एनरोलमेंट इंक्रीज हो हेल्थ आईएमआर रिड्यूस हो एमएमआर रिड्यूस हो टोटल फर्टिलिटी रेट आनी 2.1 अंडर न्यूट्रिशन चिल्ड्रन मान को नंबर को रिड्यूस कर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो 9% ऑफ जीडीपी ग्रॉस इरिगेटेड एरिया को बढ़ेबो 103 मिलियन हेक्टर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करियो 20% माने इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेज ऑल वेदर रोड वर्ष को 12 मास जो रास्ता जाई होतबो वर्षा दिन जेम असुविधा होनथबो
रूरल टेली डेंसिटी को इंक्रीज करियो 70%, 40 लीटर पर कैपिटा पर डे ड्रिंकिंग वाटर, स्पेशली 50% ऑफ रूरल पॉपुलेशन मानक पई। सो निर्मल ग्राम स्टेटस टू 50% ग्राम पंचायत। सेमती ये एनवायरमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऊपर कहला कि टू इंक्रीज द एनवायरमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऊपर कहला टू इंक्रीज द ग्रीन कवर बाय 1 मिलियन हेक्टर एवरी ईयर। केते टू इंक्रीज ग्रीन कवर बाय 1 मिलियन हेक्टर एवरी ईयर। 30,000 megawatt renewable energy during 5-year period. Emission intensity of GDP to be reduced to 20 to 25% of 2005 level by 2020. Emission intensity को reduce करी। Service delivery एगला banking service for 90% household banking service. Subsidy and welfare related payment एटा केमती ना आधार बेस्ड डायरेक्ट कैश ट्रांसफर सिस्टम रे आसे। So these were the objective of the 12th 5-year plan. 12th 5-year plan पर हम पाखरे कौन 5-year plan नहीं, rather planning commission was replaced by Niti Aayog. Let's talk about planning in Odisha. Odisha रे किछि पॉइंट कहू छि। In Odisha we have a department planning and convergence department. कौन कहल planning and convergence department। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रे किछि इंपोर्टेंट स्कीम कथा कहू छि। गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धि योजना। यार ऑब्जेक्टिव कोन ना प्री स्कूल बैग एजुकेशनल किट को मानकु ना स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 5। मालतीदेवी प्राक विद्यालय परिधान योजना प्री स्कूल एजुकेशन ने ये यूनिफॉर्म प्रोवाइड करिवो। ओडिशा आदर्श विद्यालय स्कूल ये 60 आदर्श विद्यालय आरंभ कला केवल 2017-18 रु मॉडल स्कूल जो जगह सेंट्रल असिस्टेंस डिस्कंटिन्यू हो जाइतिला एटी असला ओडिशा आदर्श विद्यालय। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन तो हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करिया पई हेल्थ प्रमोशन पॉलिसी। मेडिकल कॉलेज कोन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करियो कोटा मेडिकल कॉलेज मन करे। देन संपूर्ण मींस शिशु मातृ मृत्युहार संपूर्ण निराकरण योजना। एटी कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन लाइक इंप्रूवमेंट ऑफ मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करिवो। आईएमआर एमएमआर को रिड्यूस करिवो। निरामय एटर फ्री मेडिसिन मिलिवो फ्री ड्रग्स इनिशिएटिव इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। वसुधा बख्शी जगबंधु assured water supply to the habitations, free drinking water safe drinking water to the village। Odisha PVTG empowerment and livelihood improvement program। PVTG they are the vulnerable among the vulnerable एमाने एसटी भीतर आसंदे। स्टेटस कोन केमतिया देखा जाए ना एक होची PVTG रे को माने आसीबे एमानकर लिटरेसी रेट ड्रॉप होतिबो। लिटरेसी रेट ड्रॉप होतिबो हैला। एमाने मोस्टली ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को यूज करथिबे हैला। ओके ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज करथिबे एमानकर लिटरेसी रेट रिड्यूस होतिबो। दे आर द वल्नरेबल अमंग द वल्नरेबल्स। 575 ट्राइबल कम्युनिटी एबेत्रु एतरु जदि माने 75 आर PVTG। ओडिसा रे सबुट अधिक PVTG ग्रुप अछन। दे आर वल्नरेबल अमंग द वल्नरेबल्स। कनेक्टिंग अनकनेक्टेड विलेज एलडब्ल्यूई अफेक्टेड एरिया जोड़ा को माओइस्ट एरिया अछि ये से रीजन रे कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करिया कुछि उन्नति अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अर्बन रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अन्वेषा ये कुछि जो माने एससी एसटी स्टूडेंट मानको ट्यूशन फीस यूनिफॉर्म बुक्स ट्रांसपोर्टेशन फूड ये सब प्रोवाइड करियो कोटना बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल रे पाठ पढिया पई। आकांक्षा आकांक्षा कुछि कि हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करियो अर्बन एरिया रे फॉर द एससी एसटी यूथ। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना मिशन शक्तिर ना समस्त जानथि फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। बिजू कन्या रत्न योजना चाइल्ड डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो को इंप्रूव करिया पई। बिजू शिशु सुरक्षा योजना एटा कोन कहली जो मानकर पेरेंट्स जो शिशु मानकर पेरेंट्स एचआईवी एड्स रे इन्फेक्टेड से मानकर छुआ मानको प्रोटेक्शन दा पई। वरिष्ठ बुणाकार सहायता योजना एटा होची जो माने ओल्ड एज रे अछंती बुणाकार माने से मानको प्रोटेक्ट करिया पई ओडिसा रा कल्चर हेरिटेज प्रोटेक्ट करिया पई। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेयर ऑफ ओडिया स्टडीज इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ये कोन पई अछि ना जदी लेट्स से आपण ओडिया रे पीजी पीएचडी करिया चाहउछंती ओडिसा बाहर एमती कोनोसी स्कूल बा यूनिवर्सिटी नथिले जोटी आपण पीजी पीएचडी करि परिबे। बट ये तीनटा जगह रे पीएचडी करिया पई ओपन अप कला सेंटर ओडी ना आदिकवि सारला दास चेयर ऑफ ओडिया स्टडीज जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली रे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद रे भक्त कवि मधुसूदन राव कना रे एवं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात रे कुंतला कुमारी सावत कना रे एठी स्कूल ऑफ ओडिया स्टडीज ओपन है। देन हम देखिए केबीके रीजन प्लानिंग करला केबीके रीजन इज आल्सो इंपोर्टेंट फॉर अस। केबीके रीजन एटा होची आपनकर अनडिवाइडेड कोरापुट नवरंगपुर मालकानगिरी रायगड़ा अनडिवाइडेड बलांगीर जे होची सुवर्णपुर बलांगीर अनडिवाइडेड कलाहांडी एंड नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट को नेकी हिच। सो एठी जदि हम देखिया पॉवर्टी रेशियो 87.14% 87% एठी देख पारथिबे ये होची केबीके डिस्ट्रिक्ट। देखो ये होची संपूर्ण भाबरे ये होची ओडिसा रा केबीके डिस्ट्रिक्ट्स।
सो पॉपुलेशन वाइज यदि हम देखिबा ज्योग्राफिकल एरिया 30% एते कहली 30% ज्योग्राफिकल एरिया ओडिसा रो पॉपुलेशन वाइज यदि देखिबा 19.72% बा अप्रोक्सीमेटली 20% 20% पॉपुलेशन ओडिसा गवर्नमेंट रो डिफरेंट प्लान अछि लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान 1993-94 रे आसला बाय द बिजू पटनायक गवर्नमेंट हला नाउ इट वाज आपको रिवाइज करके ना चेंज करके कर दिया गला रिवाइज्ड लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान हला एमान को स्पेशल असिस्टेंस रीजन को मिलुछ को केबीके रीजन सो बिजू केबीके प्लान कौन पे ना इकोनॉमिक सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट करिया पे ये रीजन ने तो एक्सेलरेट पॉवर्टी रिडक्शन को कमया पे हला सो क्वालिटी ऑफ लाइफ को ए रीजन ने बढ़िया पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन रास्ता घाट पानी बिजुली ये सब प्रोवाइड करियो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक सब डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोग्राम माने कुदरे एग्रीकल्चर रे हॉर्टिकल्चरल फील्ड रे एनिमल रिसोर्स फिशरी afforestation forest based enterprise बढ़िया पे कहूची माइक्रो क्रेडिट एग्रो प्रोसेसिंग रूरल पोर एमान को एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू रे वन संरक्षण समिति पानी पंचायत थ्रू रे क्वालिटी एजुकेशन बढ़िया पे कहूची स्किल डेवलपमेंट करिया पे कहूची सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम लाइक फूड सिक्योरिटी ओल्ड एज रे पेंशन स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रोवाइड करिया पे कहूची डेवलपमेंट इफेक्टिवनेस पे कहूची रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे ट्रेडिशनल नॉलेज स्कोर ऑफ मैक्सिमम केमती यूटिलाइजेशन करा जाय पारे एटी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि व्हाई इज ओडिशा पोर डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ नेचुरल रिसोर्स हम पाखरे जदि हम देखिया मिनरल रिसोर्स अछि रिवर अछि पोर्ट अछि कोस्टल प्लेन अछि वी हैव फर्टाइल प्लेन इरिगेशन फैसिलिटी अछि स्टिल ओडिशा इज पोर व्हाई बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटी रे ओडिशा रो वेस्टर्न ओडिशा रे हमको देखिया को मिले ड्रॉट ईस्टर्न ओडिशा रे देखिया को मिले फ्लड सो साइमल्टेनियसली फ्लड एंड ड्रॉट हला ये दीरे तक नेचुरल कैलामिटी ओडिसा रे देखिया को ड्रॉट एज वेल एज फ्लड अनटैप्ड पोटेंशियल हम पाखरे पोटेंशियल अछि बट से पोटेंशियल को हम यूटिलाइज करू दिस पोटेंशियल इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली नो कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं एलडब्ल्यूई माओइस्ट माने दे आर द हिंड्रेंस टू डेवलपमेंट से माने डेवलपमेंट चाहते रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज आल्सो लो उनको लो रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लिटरेसी रेट ओडिसा रे कम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर नहीं ताले सॉल्यूशन कोन नेचुरल कैलामिटी को रिड्यूस करबा अनटैप्ड पोटेंशियल को यूटिलाइज करि परिबा कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेबा हेल्थ एजुकेशन ने अधिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करि परिबा इंडस्ट्रियलाइजेशन रेट को बढ़ेबा एफडीआई बढ़ेबा बा एमएनसी मानकर एस्टैब्लिशमेंट करेबा एससीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन आनी परिबा ठीक अछि So, this point मानक ऊपर हम डिस्कशन करें. This is a brief discussion on the planned economic development or system in India. ओडिसा रो भी किछि इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर मु कहली एठी समस्त को बुझी पारथियो माउची जो पॉइंट ऊपर हम डिस्कशन कले हम केतरा क्वेश्चन कहूची ये क्वेश्चन आपण माने मते आंसर रे जणाइबे अटल इनोवेशन मिशन इट इज सेट अप अंडर कहा अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप The government of India established Niti Aayog to replace Niti Aayog कहाँ को replace कले Planning Human Rights Commission को Finance Commission को Law Commission को ना Planning Commission. What is the main objective of 12th 5-year plan? Inclusive growth and poverty reduction, inclusive and sustainable growth. ना sustainable inclusive growth to reduce unemployment, faster sustainable and more inclusive growth. इटा ठीक important. यार आंसर करियो समझ. So in the context of 5-year plan, a shift in the pattern of industrialization with lower emphasis on heavy industry, more on infrastructure, it began in which plan? 4th, 6th, 8th or 10th plan? Inclusive growth as announced in 11th plan doesn't include which of the following? Reduction of poverty, extension of employment opportunities, strengthening of capital market, reduction of gender inequality. So, ये किसी important question दिली, ये question रा answer क्लास परे आपण मन मते कमेंट सेक्शन में जणाइबे ताले कोन डिस्कस कले हम आज व्हाट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो एठी हम डिस्कशन कले अबाउट प्लानिंग रा मीनिंग देखिले व्हाट इज प्लानिंग व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग 12 5-year plans in India केबीके रीजन एवं ओडिसा रे प्लानिंग ऊपर हम ब्रीफ डिस्कशन करें एमती अनेक इंपोर्टेंट सेशन हमें आगामी क्लास मानक रे आनिबा सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू